Learning is never done without errors and defeat. A very warm good morning to everyone present here. Today's assembly is being conducted by the following students. Command by Shubha, pledge by Nishi, thought by Varsha, news by Anshika and Arsh, word by Sujit, special item by Sunana and Vaibhavi, and at last, introduction by myself, Vaishnavi Singh. Thank you and have a nice day. School, attention! Pledge. School, sanity. Word of the day. थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। एक बार पुनः, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। धन्यवाद। An open and critical mind. Good morning to all. Today's news headlines are brought by me and Arsh. So, first some national news. BJP leaves Congress far behind in Rajasthan. Only 9 Gehlot's 26 minister wins. PM Modi thanks voters, say this hat-trick of victories a guarantee for 2024 hat-trick. Now, some international news. Alaska Airlines to buy Hawaiian Airlines for 1.9 billion. UK Army using solar panel tied to forced labor in China. Now over to Arsh. Thank you, Anshika. It is hard to beat a person who never gives up, as rightly said by Babe Ruth. Now I present to you some sports news. India beats Australia by 6 runs in the 5th T20 clinch series. Vaishali Ramesh Babu makes history by becoming India's 3rd female grandmaster. Mohun Bagan Super Giants bounce back with clinical 2-0 win over Hyderabad. Now some local news. A parallel inspection is being conducted in Kendriya Vidyalaya Singrauli by officials from Regional Office Jabalpur. Thank you. Good morning to all. Today's word is benevolent, meaning showing kindness or goodwill. Sentence: Mother Teresa had benevolent attitude towards all human beings. Please repeat after me. Word benevolent, meaning showing kindness or goodwill. Thank you. Have a nice day. प्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके सामने कुछ संस्कृत श्लोक लेकर प्रस्तुत है। तो लीजिए, कुछ इस प्रकार है। पुस्तकस्तातु या विद्या परहस्गतं च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने यसां विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाजम न च भारकारी व्यकृत्य विद्यतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न ही इसका भाइयों में बंटवारा होता है और न ही इसको संभालना कोई भार है, और जो खर्च करने से नित्य बढ़ता है, ऐसा विद्या रूपी धन सभी धनों से श्रेष्ठ है। काकचेष्टा बकोधनाम स्वानिग्रातथैव च अल्पहारी घरत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह कुछ नया जानने की प्रबल इच्छा, बगले की तरह ध्यान व एकाग्रता, कुत्ते की जैसी नींद जो एक आहट में खुल जाए, अल्पहारी अर्थात आवश्यकता अनुसार खाने वाला वह गृहत्यागी। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ और बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ। धन्यवाद। Today we are going to present our poem Wake Up! Wake Up! Wake up, wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. Oh please get up, and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. Oh please get up,
up, it's a